right. Welcome to lecture 4 of data mining task and techniques. So today we will discuss data preprocessing. Data preprocessing involves several techniques and several tasks and techniques. We will discuss them fairly quickly because most of these things you might have studied in other courses as well. And much of the techniques are quite easy. So So that's the primary agenda for today. In the previous lectures, we had talked about data understanding, domain understanding, and data understanding, and we had also discussed the data mining process. So all of these phases are part of the data mining process. So as you know, we have business understanding or domain understanding followed by data understanding, and then we have data preprocessing. After that, we have modeling and evaluation and then deployment. So, so that's basically the plan for today. All right. So, are there any questions? So, so we want to discuss data preprocessing. Mm. And we mentioned that data preprocessing has two main goals. So there are two primary goals of data processing, preprocessing. One is to improve the quality of the data or to assess and improve the quality of the data. So the first main goal of data preprocessing is to improve the quality or to make sure the data is of reasonable quality for the particular task that you are going to do. And what is the second primary goal or goals of data preprocessing? We want to shape the data uh, for our modeling task. So different modeling tasks may require data to be in different formats. And I'm using the word format quite generally. Format can include, you can say, different selections of the data, different set of attributes, different set of objects, as well as it can also include, uh, it can also involve different formats in the physical sense of the data. Maybe the data is required in the form of uh, tabular form or in CSV or in a graphical format and a specific form or graphical format. So all of this is formatting. So we want the data to be shaped in a way that it can be used for processing and modeling and analysis. So these are the two main goals of data preprocessing. The first one is to improve the quality, and the second is to shape it into the form that is needed. So let's first talk about quality. We mentioned quality last time as well. So quality can be assessed both quantitatively and qualitatively. Full screen delivery.
Can you see my screen, by the way? Yes, sir. Yes, sir. There are in the screen. So just a second. Zoom. Okay, just give me a second. Okay, this is the Zoom. Okay. All right. All right. So I think now it's full screen, right? नजर आ रही है आपको? Yes. So, as I said, data quality can be assessed both quantitatively and qualitatively, and in practice, we will do it in both ways. Uh, for quantitatively, we'll need to define some measures, and those measures usually will be quite simple, like the number of missing values, the number of missing rows, the number of missing or the number of unknowns, or number of nulls, or number of NAs. So all of these can be used to assess the quality of the data. So from a qualitative perspective, there's several adjectives or characteristics that we need to assess. So one is accuracy. So how accurate is the data? And accuracy really refers to the closeness of the value to its true value. Okay? So we need to look at the data and see how close or accurate the value is to its true value. The other characteristics that you need to assess is the completeness of the data. So is the data complete for the particular task that and goal that you are envisioning for your analysis? And then we need to look at consistency as well. So is the entire data that you have of high quality, or are there portions of it that are of low quality? And if so, which portions are those? And do we really need to consider those portions, or can those portions be removed or not? So consistency basically issues in inconsistency usually arise when you integrate data from multiple sources. So accuracy, completeness, consistency. And then, of course, we need to consider timeliness. So outdated data is really not useful. And so if you're analyzing trends for sales of a particular retail store, then you are more interested in the last 1, 2 years maximum. So you don't want data from the past 20 years, for example. So timeliness is also important and depends on your task as well. And then, of course, by looking at the data, is the data really believable? Meaning that if you see a number or a value, does that really make sense? So as a data scientist, you need to also look at the data in this way as well. And then, of course, interpretability. So can you reason through the data and back to the business process, or business to the business that is generating that data? So these are things that you need to think about qualitatively about the data. So accuracy, completeness, consistency, believability, timeliness, and so on. So, and by looking at and kind of assessing each of these characteristics, you'll get a good idea of the quality of the data. So as I said, one of the goals of preprocessing is quality. The second goal is to shape the data. And of course, for that, we'll also need other techniques. And data preprocessing generally has several other techniques within it. And these techniques are often divided in these headings, you can say. So one is data cleaning. As the name suggests, we need to improve the quality of data in this step. And missing values can be filled in or removed, and those missing values can be removed, or then
If there is noisy data, you need to fill those noise. Outliers need to be removed. If there are inconsistency, then those needs to be resolved. So then the other main heading is data integration. As the name suggests, we are combining data from multiple sources. Those sources can be different formats, even from different locations and different time spans. So integration is a major, you can say, step in data preprocessing. And the other main heading is data reduction. Here again, the idea is to reduce the size of the data. And as we will see later on, reduction can be both in terms of number of rows if you have a tabular data or number of attributes. Uh, so basically number of attributes or the number of rows. So both of them can be reduced to reduce the size of data. And reduction, of course, has to be done without hopefully changing the data significantly and hoping to get the results that you are looking for at the end of the day. And of course, why do you do reduction? To improve performance in terms of efficiency, computational efficiency. And then another main heading is data transformation. And within this, you have various other techniques like normalization and discretization. And in general, actually, these are headings. Techniques within these headings may be applicable to other techniques that may fall in other headings. So, and also, for example, if you talk about data reduction, so data reduction may also do data transformation, or data cleaning can also result in data transformation. So ये headings सिर्फ आपको organize करने के लिए हैं, but the techniques within them may be used elsewhere, as well as what is happening in those headings may also happen in other headings as well. So data transformation, for example, is a very general uh, heading. So data reduction में भी oftentimes transformation हो रही है, data cleaning में भी हो रही है, integration में भी हो रही है. ठीक है? So let's quickly go over each of these major steps in data preprocessing. So first of all, data cleaning. So data cleaning, as the name suggests, are techniques that are used to improve the quality of the data. And quality of the data may be poor because of various things. So missing values or objects. ठीक है? Then we have noise and or outliers. ठीक है? So noise can be introduced to various reasons. Human as well as technological errors can introduce noise into the data. And then in general, inconsistency as well. So all of these issues fall under data cleaning. Resolving these issues is called data cleaning. Okay. So missing value very quickly. So if first of all, you need to have a number for the missing values. कोई आपने quantitative measure define किया होगा. If you find that a particular attribute 70% of its values are missing, a particular attribute, let's say salary का attribute 70% values missing है. So that attribute, based on your judgment, may not be useful for analysis. ठीक है? So you can drop it. The whole attribute can be dropped. But if you find, and of course, based on some threshold, so 70% is a very large number of values that are missing. But if the number of values that are missing are lower, you may consider using those values with the missing values or by filling in those values. So you can actually fill in values as well. And the idea in filling in the values is
we want to fill in the values as close to the true values. And obviously, since you're going to use a model to fill in the values, you're not going to achieve. So for example, if you have a paper trace of recorded data, then you can go back to the paper trace and fill in the values manually. So that obviously is very time consuming. If you don't have that and you still need to fill in values, then you can use several models. But usually those models are simple models. So for example, fill in by mean, by the means of all the other values. So obviously it's your judgment whether this would be a good filling or not. So you can do fill in by mean for categories. So meaning that let's say हम salaries को fill कर रहे हैं, so we'll take the mean for managers, and if there's a manager who has a missing value, उसको उससे भर देंगे. And we'll take means for assistant managers, और कोई assistant manager उससे fill कर देंगे. Rather than one global mean. जो पहली technique है one global mean है. So mean for entire set of employees, including assistant manager, managers, senior managers, and so on. Okay? Obviously, as you can see, the second might give you better results in filling in values. But in any case, all of these filling techniques would and can introduce bias. And as a data scientist, we need to judge and determine whether this bias is acceptable to us or not. If not, then you need to not do the filling and drop that attribute. Okay? And of course, you can use more sophisticated techniques as well. Let's say, for example, decision tree model or so on. But this is generally not recommended. We usually stick with simple techniques. Either stick with simple techniques or we simply drop the attribute or the objects that have missing values. So sometimes आपका complete row एक object है, एक entity है, उसमें भी various missing values हैं. Again, the same thing will apply. So let's say एक particular customer है XYZ, उस customer XYZ की सारी or majority of the values blank हैं. So obviously that customer is not adding value to your data. You can maybe remove that customer and that particular row from your database. ठीक है? ठीक है, so the takeaway here is that we assess the missing values both in the attributes separately as well as in the rows. If they are above our threshold, we drop those attributes or rows. If they are not above our threshold and we would like to retain those attributes and rows, then we will need to fill in those values. So fill in के लिए फिर we usually stick with simple techniques, but whatever technique that we use, we need to keep in mind the bias that it may introduce. तो bias आपके final analysis में भी आ सकता है. ठीक है? So you need to be aware of that. One other point here is that why do we really want to fill in the value? Why can't we use the data with missing values? So there are some techniques that do not run when you have a blank in your data. So they might throw an exception. Okay? That's why filling might be desirable in such cases. But there are other techniques, and usually there are fewer. There are some techniques that can work even if you have missing values in your data. So for example, the decision tree learning algorithm usually is not hampered by missing values in your data. Of course, its results quality will decrease, but it will not throw an exception. चल जाएगा algorithm. ठीक है? So you need to consider this as well. So missing values के साथ अपने करना है या fill करना है या drop करना है. So several options are. So then we have the issue of noise and outliers. ठीक है? So noise is random variation in the data that is not true, and outliers are values that are significantly different from the rest of the data. So both of these may be undesirable in analysis, and we need to fix them. So
Outliers, of course, we need to identify and remove them. So remove outliers. So आउटलायर डिटेक्शन हमारी एक टास्क भी है डेटा माइनिंग में, वो हम डिस्कस आगे भी करेंगे. देयर आर techniques that can help identify outliers, and then once those outliers have been identified and you have known or found them to be anomalous, you can remove them. Sometimes outliers are not anomalous, they are actual true values coming from the business process. तो ये भी अगेन एक जजमेंट कॉल आपको करनी पड़ेगी कि क्या एक वैल्यू जो आपको सिग्निफिकेंटली डिफरेंट लग रही है, इज इट एक्चुअली ए अनकॉमन इवेंट produced by a business process, or it was produced randomly or by noise. ठीक है, तो ये भी आपने जजमेंट कॉल करनी है. ठीक है, सर रिमूवल ऑफ आउटलायर्स हम टेक्निक्स आगे जाके भी स्टडी करेंगे, सो दिस कैन बी यूज्ड हियर. फॉर नॉइज, नॉइज इज जनरली मेंट एज रैंडम वेरिएशन. तो रैंडम वेरिएशन है तो मे बी यू कैन यूज सम टेक्निक्स फॉर स्मूथिंग फॉर नॉइज. ठीक है, तो smoothing generally is again based on some model. ठीक है, and whenever we introduce a model and change the data, we must be aware of bias. Just like हम fill in data cleaning में values fill कर रहे थे, वो भी bias create कर रहा था. यहाँ भी ये bias create कर सकता था. Again we need to be aware of that. अब smoothing के कई techniques हैं. Just mention the names here. The most common and simplest is binning based smoothing. So continuous attributes and numeric attributes हैं, आप उनको bin कर सकते हैं. And binning by frequency, by width and by depth दोनों होते हैं आपके पास options. And then within each bin उनकी सारों की values की आप mean ले लें या mode ले लें या median ले लें या कोई और variation ले लें. So replace all the values within a bin with one or a few values rather than all of them, keeping all of them. ठीक है, सो अगेन लेट्स से आपके पास एक बिन में वैल्यूज आ रही हैं, 22 है, 23 है और 25 है. दिस इज अ बिन फॉर सम वैल्यूज. सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑल दीज थ्री वैल्यूज यू कैन कीप द मीन. मतलब इस तरह स्मूथिंग हो जाएगी. ठीक है, सो 22, 23, 25 का मीन क्या होगा? 22 प्लस 23 प्लस 25 डिवाइड बाई 3. सो 23.3 आप तीनों को रिप्लेस कर लेंगे. तो 23.33, 23.33, 23.33. तो इस तरह आप स्मूथिंग कर सकते. दिस इज द सिंपलेस्ट एंड आई वुड से ऑल्सो द मोस्ट कॉमन टेक्निक. अगेन डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम कोशिश करते हैं सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स ना यूज करें, because their bias would be more difficult to quantify and assess. ठीक है, I'm kind of under the weather today. आजकल मौसम भी अजीब सा है. इतना हो रहा है. ठीक है, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स में जैसे रिग्रेशन टेक्निक्स यूज हो सकती हैं. ये AI/ML में आपने पढ़ी होंगी. तो इफ योर डेटा कैन बी मॉडल्ड बाय सम इक्वेशन, देन इंस्टेड ऑफ ईच ऑफ दोज वैल्यूज यूज द वैल्यू जनरेटेड बाय योर इक्वेशन. तो उस तरह वो आपको एक स्मूथ लाइन मिल जाएगी. ठीक है, बट अगेन एज आई सेड, डिपेंडिंग ऑन द नीड and you will apply these techniques. Generally, regression technique time series data पे ज़्यादा applicable है. Although binning भी कर सकते हैं time series पे, but binning of course other data पे भी हो सकता है. For example, age का data है या आपके पास height का data है, उस पे भी हो जाएगा, which is by the way not time series. But binning time series पे भी कर सकते हैं. जैसे सेंसर का डेटा है, आप एक एक मिनट के 5-5 मिनट के चंक्स ले लें और उसको स्मूथ कर दें. एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन यूज रिग्रेशन एज वेल. तो लीनियर रिग्रेशन से कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक रिग्रेशन एंड सो ऑन. ठीक है, सो दिस वाज नॉइज एंड आउटलायर, एंड द फर्स्ट वन वाज ऑफ कोर्स मिसिंग वैल्यूज. इनकंसिस्टेंसीज जो होती हैं, सो देयर इज नो वन you can say specific technique to look at inconsistencies. This is a kind of a
you need to identify inconsistencies through multiple ways. तो ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक वेज आपको यूज करने पड़ते हैं. ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक. सेमी ऑटोमेटिक मतलब ह्यूमन इन द लूप, सो यू हैव टू चेक. तो दो वैल्यूज को आप कंपेयर करें फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, एंड इफ दे आर डिफरेंट देन इट मीन दैट इनकंसिस्टेंट है. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल अगेन, लेट्स से आपके पास सेल्स का डेटा भी है, आपके पास मार्केटिंग का डेटा भी है. दोनों में एक जगह पे कोई कस्टमर आ रहा है, आसिफ उसका नाम है. ठीक है. एक जगह उसका नाम आसिफ अली लिखा हुआ है, दूसरी जगह फॉर एग्जांपल आसिफ अहमद लिखा हुआ है. एंड अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स अपीयर टू बी सिमिलर. तो is this the same person or not? It might be a typing error, it might be some other error. तो इस तरह की inconsistencies, let's say all the rest of the attributes are the same, but the नाम different है, या नाम दोनों का सेम है, बाकी attributes different है. इस तरह के issues, as I said, automatic semi automatic techniques है, scripts लिखनी पड़ती हैं through which you can identify such issues. ठीक है. सो इनकन्सिस्टेंसी, अनदर पॉइंट इज, इनकन्सिस्टेंसी बहुत जनरल टर्म है. डिफरेंट किस्म की इनकन्सिस्टेंसीज हो सकती हैं. समटाइम्स you might be surprised by the inconsistencies that you see in your particular data. मतलब, so you need to be wise and kind of open to different kinds of inconsistencies. तो units change different हो सकते हैं, that might lead to inconsistency. Values, let's say दोनों height हैं, एक height meters में है, दूसरी height feet में है. The units are different, the values will be different. ठीक है. So need to verify whether they are actually different or there was some other issue. In this particular case, unit different था. ठीक है. So let's move on. So this was data cleaning. ठीक है. और data cleaning, and in general, data preprocessing as a in general is a dirty job. Data cleaning is removing dirt, but overall, data preprocessing is a dirty job, and it's also a time-consuming job. So there isn't one magic button that you can press and you'll say that, okay, data cleaning has been done or data preprocessing has been done. So iterative है, repetitive है, you need to come back, look at it again and again from different angles, different perspectives, and then move on. So oftentimes industry में इसके estimates निकाले होते हैं, तो usually above 70% of time for data analysis. So, and this is one of the reasons why people who are in the data science industry, let's say if you are employed as a data scientist, so you tend to get bored because much of your work is data scrubbing and data cleaning and data processing. So it does get boring because इसमें कोई exciting चीज नहीं होती, but you need to look into the data and try to figure out and improve its quality. So 70% of the effort oftentimes goes into this. Okay. So let's move on. Any questions, by the way? तो ये again a reminder, if you have a question you can send me a text message proper English में लिखा हो तो I will be able to understand it properly. Of course you can always unmute and speak up as well. Or third option, of course, you can raise your hand, उसकी notification भी hopefully आ जाएगी. ठीक है. Okay, so next one is let's talk about data integration. So another major heading within data preprocessing, the first was data cleaning. So data integration may, as the name suggests, focus is to combine data from multiple sources into one coherent resource. And in large enterprises,
this is also again a major, major, you can say, time-consuming task, or it is also oftentimes known by certain names, extraction, transformation, and loading, which actually combines multiple things. But all of this is usually transformation. So extraction, transformation, and loading. ठीक है? So extract multiple sources से आपने data extract करना है, transform करना है, and load करना है. So this load, of course, is the final format in which you want to do the analysis. And this pipeline or this workflow is often used in building a data warehouse also. ठीक है? So data warehouse is a consolidated resource of data for your entire enterprise. Consolidated single resource and also coherent resource for your entire enterprise. More recently, ELT का भी नाम आ रहा है. ELT, of course, extraction, loading, and transformation. उसमें basically you collect data, load it into one repository, but it may not be coherent. It may not be, you can say, in one schema. It may remain in multiple schemas, but it is brought into one physical location. Okay? And then do the transformation after extracting data from this. So फॉर एग्जाम्पल इसके एक्सट्रैक्शन और लोडिंग जो एक सेंट्रल लोकेशन पे जब डेटा आ जाता है उसको हम टिपिकली कहते हैं डेटा लेक. ठीक है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा लेक एंड डेटा वेयरहाउस? डेटा वेयरहाउस का एक ही स्कीमा होता है. सो सारा एंटरप्राइज का डेटा एक स्कीमा में कंसोलिडेटेड कोहेरेंट फॉर्म में आ गया है. डेटा लेक भी सारा डेटा है एंटरप्राइज का, बट एक स्कीमा में नहीं है, बट यू हैव ब्रॉट देम इनटू वन फिजिकल लोकेशन. ठीक है. सो ये दोनों टर्म्स यूज होती हैं. डेटा लेक्स हैव बिकम मोर पॉपुलर रिसेंटली. तो but the idea again is to collect data from multiple sources and bring it into one place from where you can then extract and transform the data required for your analysis. ओके. सो ट्रांसफॉर्मेशन में सॉरी इंटीग्रेशन में हमारे पास जो इश्यूज आते हैं, लेट्स जस्ट डिस्कस दोज फर्स्ट. सो सबसे बड़ा इशू तो एक इनकंसिस्टेंसी का आता है, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, विच इज अ रीजन फॉर रिडक्शन इन क्वालिटी. ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट इश्यूज रिजल्टिंग फ्रॉम. ठीक है. Inconsistency, let's say if you try to integrate data from multiple sources, you may have the same information from multiple sources. uh, so how do you ensure that you combine them in a consistent way? So inconsistency may both schema schema inconsistency आपने consider करनी है, और also value inconsistency. So maybe multiple databases में जो metadata है या attribute की heading ही है, जो नाम है, it might be different, but it might be talking about the same thing. So for example, let's say एक database persons का में heading है CNIC है. ठीक है. दूसरे database में simply ID लिखा हुआ है. But within those two headings, within those two attributes names, we have the same CNIC. ठीक है ना. तो ये you need to find out whether they are the same values or different values. और ये flip भी हो सकता है, आपके हेडिंग नाम सेम है, अंदर वैल्यूज डिफरेंट है. ठीक है. सो लेट्स से एक 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 डेटाबेस में आईडी लिखा हुआ है, दूसरे डेटाबेस में भी आईडी है, बट दोनों में चीजें डिफरेंट हैं. एक में CNIC दी हुई है, दूसरे में कोई यूनिक रैंडमली जनरेटेड आईडी है. ठीक है. तो इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं. सो यू नीड टू डू स्कीमा इंटीग्रेशन, you need to do value integration, and be aware of the inconsistency that may arise because of this.
सो इसमें ऑफ कोर्स हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डुप्लीकेट का इशू आ सकता है. डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स फॉर एग्जांपल. ठीक है. दे मे हैव डिफरेंट नेम, जैसे मैंने ऊपर कहा था CNIC एक जगह है, दूसरी जगह पे ID है, बट दोनों में CNIC ही है. तो हाउ डू यू नो दैट दे आर डुप्लीकेट? तो इसमें कुछ ऑटोमेटिक टेक्निक्स हैं. ऑब्वियसली दोज टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन कोरिलेशन. ठीक है. तो कोरिलेशन हमने पीछे स्टडी किया था बेसिक स्टैट्स में. दो न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स हैं तो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लें. दो आपके पास कैटेगोरिकल हैं तो काई स्क्वायर निकाल सकते हैं. एक कैटेगोरिकल एक न्यूमेरिक एंट्रोपी निकाल सकते हैं. इफ द कोरिलेशन इज स्ट्रॉन्ग और ऑलमोस्ट 100%, देन दे आर लाइकली टू बी डुप्लीकेट. तो इस तरह ऑटोमेटिक आप स्क्रिप्ट चला सकते हैं, फाइंड आउट potential duplicate attributes in your data. ठीक है. So we have talked about duplicate. Talked about in general consistency issues arising from merging schemas and merging values. ठीक है. इंटीग्रेशन में from an implementation perspective you also need to be aware of के आपके पास ना डेटा कनेक्टर्स सारे होने चाहिए. So you should be able to access all the various types of data digitally. So let's say आपके पास एक डेटा, आपके पास SQL डेटाबेस है, दूसरा आपके पास नो SQL डेटाबेस है, और नो SQL में डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं, कोई कसेंड्रा डेटाबेस है, काउच DB है, कोई कुछ है. तो you should be able to access all of them through your programming interface and bring them to a common location. ठीक है. Common workbench where you can then check the various consistencies and duplicates issues. ठीक है. So that's about data integration. So any questions? All right. So let's now talk about data transformation, another heading in data preprocessing. Uh, so this heading, it's kind of a more general heading, but ये separate इसलिए की हुई है because इसमें कुछ ऐसी techniques हैं जो हम इसके अंदर only डाल लेते हैं, but हमने जितने भी पीछे कुछ टेक्निक्स देखी हैं, जैसे फिलिंग इन मिसिंग वैल्यूज या स्मूथिंग डेटा या डेटा इंटीग्रेशन में, डेटा इंटीग्रेशन में तो ऐसा कोई चेंज नहीं आ रही अनलेस यू सेलेक्ट एंड ड्रॉप एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज. बट whenever you are changing the data there is a transformation. ठीक है. So so you can say filling techniques can also do data transformation. Regression techniques will also do, smoothing techniques will also do data transformation and so on. पर इसके अंदर स्पेसिफिकली हम दो तीन और भी मेंशन करेंगे. वन इज नॉर्मलाइजेशन. So data normalization, meaning you want to ensure that the values in your data are uh, so numeric. Actually normalization एक जनरल टर्म है. हम तो टिपिकली एज्यूम ये करते हैं कि न्यूमेरिक एट्रीब्यूट है तो उसको नॉर्मलाइज कर लें विद इन सम रेंज, बट ये कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स के लिए भी नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं. ठीक है. सो वन इज नॉर्मल, आई जस्ट मेंशन व्हाट इट इज, लेट मी राइट इट फर्स्ट. डेटा नॉर्मलाइजेशन है, इसके डिस्क्रिटाइजेशन भी इसके अंदर डाल देते हैं लोग. जो न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स को अपने कैटेगोरिकल बनाना है, कुछ लेबल्स असाइन करने हैं, तो दैट्स कॉल्ड डिस्क्रिटाइजेशन. ठीक है. एंड देन यू कैन आल्सो या मैं देयर आर अदर टेक्निक्स हियर एज वेल. फॉर एग्जांपल आपने ऊपर आगे जैसे हम डेटा रिडक्शन में देखेंगे, डेटा कंप्रेशन वगैरह करेंगे, दैट्स आल्सो ट्रांसफॉर्मेशन, बट वो हम डेटा रिडक्शन के अंदर डिस्कस कर लेंगे. सो लेट्स डिस्कस दीज टू फर्स्ट. ठीक है. सो नॉर्मलाइजेशन मैंने कहा था, इफ यू हैव न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स, इसमें normalization usually means that you are fitting the values of a particular attribute
विद इन सम रेंज। ठीक है। तो इसमें जो दो मोस्ट कॉमन टेक्निक्स हैं, might have used this somewhere else as well, min max normalization है. So you specify a minimum and a maximum for the attribute values, and you change or linearly transform all the other values to within that range. So usually min max normalization में often times हम 0 और 1 के दरमियान normalize कर देते हैं। ठीक है। So that's one technique. Of course ये 0 1 would most cases में तो चल जाता, but maybe in some scenarios you might want to choose some other values. -1 to +1 भी हो सकता है, या some other values. The other most common technique is z-score normalization. So I'll ask a quick question here. So z-score normalization कितने लोगों ने, या how many have heard this technique before? What is the z-score? Stats में आपने कहीं पढ़ा होगा। So the z-score is a value that okay. Yes. So at least I've got. All right. So you guys know at least the few responses that I got, all of them are correct. Uh, so basically, the z-score normalization is obtained by subtracting the mean and dividing by the standard deviation of a sample of values. So let's say आपके पास एज की वैल्यूज हैं इन ए डेटाबेस। ठीक है। आपने उसके जी स्कोर निकालना है। एज प्राइम मैं कहता था, न्यू वैल्यू would be simply age minus the mean of age in your database divided by standard deviation of age in your data. So, so this new age prime, this new value age prime would be zero mean and unit standard deviation, because आपने उसमें मीन सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हम इसको समटाइम जब मीन सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी वैल्यू में से, हम कहते हैं इसको सेंटरिंग भी कहते हैं इसको, वी आर सेंटरिंग द वैल्यूज। इन दिस केस वी आर सेंटरिंग इट, ब्रिंगिंग its mean to 0. And then since we are dividing with the standard deviation, so we ensure that the spread also is uh, normalized in a way so that it has a standard deviation of 1. So subtract करके centering कर रहे हैं, and then we are dividing it by a constant, which is the standard deviation. So this new value age prime would be the z-score of age. Okay. So one quick question. So why do we need to do normalization? So min-max normalization या z-score normalization क्यों करना चाह रहे हैं? So oftentimes in our analysis, we may have multiple attributes, multiple numeric attributes. Each of those may have significantly different ranges. So for example, आपके पास एक attribute age है और दूसरे attribute salary है। ठीक है। एज का रेंज ऑफ कोर्स आपको मे बी 80 से 10 तक होगा, 80 से 20 तक होगा। लेट्स से एम्प्लॉय का डेटाबेस है, 80 से 10 तक हो, 80 से 20 तक होता है, तो रेंज इज जस्ट 60। बट सैलरी की रेंज could be from let's say 1 million to 10,000. So from the difference between 1 million and 10,000, so that's a massive range, while in the case of age the range is only 60. तो जब आपके पास एक ही डेटा सेट में इस तरह के मल्टीपल रेंजेस होती हैं, देन योर एनालिसिस में बी overshadowed by one attribute over the other. So
in this particular case, if you do not normalize, तो सैलरी की वेरिएशन ही आपको नजर आ रही होगी एनालिसिस में. एज would become almost insignificant. Maybe, in fact, if you plot this through data, all of the data, and if you have the same scale for age and salary, तो सैलरी का जो स्प्रेड वो ज्यादा होगा, एज का स्प्रेड इतना सही होगा. ठीक है, इन द सेम स्केल. So it might just appear like a line. So to highlight the importance of each attribute, or to ensure that each attribute plays a reasonable role in the analysis, we would like to normalize attributes and their values. All right. Uh, so these are the two most important techniques, but I mentioned that normalization can also be applied to categorical data. ठीक है. So categorical data में नॉर्मलाइजेशन जो होती है वो सो इस सेंस में हो सकती है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका डेटाबेस है कि जॉब रोल्स का एक एट्रीब्यूट है. ठीक है. सो जॉब रोल्स में या जॉब टाइटल्स कर लें, तो सो इसमें मे बी यू माइट हैव सेवरल वैल्यूज. सो आपके पास है फ्रंट डेस्क असिस्टेंट. ठीक है. एक ये आपने नाम नाम दिया हुआ है. एक लेट से आपने क्लर्क का नाम भी दिया हुआ है. एक लेट से आपने कहा हुआ है कि ऑपरेशन असिस्टेंट दिया हुआ है, एंड सो ऑन. So you might look at your data and see if there are values that are essentially the same. So you may replace all of them with just one value. So these three values may represent the same, almost the same role. So instead of keeping them as separate values, you just give them one value. So maybe आपने सिर्फ इन तीनों को ऑप असिस्टेंट से रिप्लेस कर दिया. ठीक है. ऑपरेशन असिस्टेंट से आपने रिप्लेस कर दिया. सो वेयर एवर यू फाइंड क्लर्क फॉर एग्जांपल और फ्रंट डेस्क असिस्टेंट, तो आप उसको ऑपरेशन असिस्टेंट से चेंज करते हैं. ठीक है. सो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन. तो फॉर एग्जांपल जैसे एड्रेस, हमारे पाकिस्तानी एड्रेसेस होते हैं, रोमन उर्दू हमने इंग्लिश में लिखी होती है, तो ऑफन टाइम्स स्पेलिंग्स के वेरियस इश्यूज होते हैं. तो सो उसमें यू नीड टू नॉर्मलाइज दैट एज वेल. सो आपने फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रीट आपने लिखी हुई है, लेट्स टॉक अबाउट सम स्ट्रीट इन लाहौर फॉर एग्जांपल. मुझे थोड़ा सा मुश्किल नाम लेना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल बेदिया रोड. So some people might write spell Bedian this way, others may spell as this way, others may also write as Din, for example, and so on. All of them are talking about the same road, but they are spelling it in different ways, and it represents a different value in your database. So you can normalize them and uh, kind of collapse them to just one value. ठीक है. So इस तरह की केसेस में ऑफ कोर्स you can rely upon NLP techniques. Maybe edit distance आप use कर सकते हैं to find the difference between the dissimilarity between two values and see if they're close. If they're fairly close enough, you can collapse it into one. ठीक है. So that was normalization. So you notice that normalization में भी आपके पास values change हो रही हैं. So that's why this is called transformation. ठीक है. So the other aspect that we mentioned within transformation was discretization.
So discretization, as the name suggests, is convert numeric to categorical. ठीक है, values. So the first question obvious is why do we want to do this? So there are some algorithms, there are some tasks that work well or better on categorical attributes and or vice versa on numeric attributes. ठीक है? ऑफ कोर्स कैटेगोरिकल से न्यूमेरिक करना ज़्यादा मुश्किल है अदर देन कि आप उसको कोड कर दें 0 1 2 3 4 बट न्यूमेरिक से आप कैटेगोरिकल कर रहे हैं तो यू डू हैव ए नंबर ऑफ ऑप्शंस और दिस न्यूमेरिक टू कैटेगोरिकल वाला को हम डिस्क्रिटाइजेशन कहते हैं उल्टे को हम एक्चुअली डिस्क्रिटाइजेशन ही कहते हैं विच इज़ जस्ट कोडिंग आप कह लें एनकोडिंग कह लें इसको ठीक है सो So, for example, the a priori algorithm or the whole task of frequent pattern mining, which we'll study starting from next class, uh, does not work on numeric values. It works on categorical values. So you need to convert any numeric data that you have and you want to apply pattern mining on it to categorical before you can apply that technique. ठीक है अब इसमें again you can use various techniques and we will usually stick with simpler techniques rather than complex techniques. So the simplest and most common is called based on binning based discretization. ठीक है so binning remember was used previously for smoothing also. So it's the same approach. Numeric values को आप bin कर दें either equi-width or equi-depth. Equi-depth is also called equi-frequency. Equi-width is जो भी interval है उसके हिसाब से and then within that interval जो सारी values है उसको एक label दे दें तो for example आपके पास age है तो age आपके पास let's say आप एक bin बना दें 20 to 30 का एक bin है एक 30 to 40 का है एक 40 to 50 का है और एक let's say 50 to 60 का है let's say equivalent binning कर रहे हैं हम ages की. So instead of now keeping all of those values, we just assign a label to each group and any value within that group would be assigned that label. So again अब ये मैंने division 10 times की हुई आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको so age group 1 कह लें इसको age group 2 कह लें age group 3 कह लें and age group 4 कह लें so let's say आपके पास कोई value 24 है किसी की age you basically call it age group 1 उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी टू द लेबल AG1 so this AG1 is a label it's a categorical value ठीक है so this is the kind of the most common technique for doing discretization. I will mention the other techniques as well, but usually for discretization, हम simpler techniques जैसे मैं कहते use करते हैं, but we can use these others as well. So you can use, for example, decision trees or entropy-based techniques for discretization as well. ठीक है So you can use entropy to find those bins. And within those, once you have found the bins through entropy, you can assign one label to each bin. ठीक है Of course, decision tree इसमें एक और characterization भी है. So discretization can be supervised and sometimes it can be unsupervised. And then another categorization. Discretization can be top down and it can be bottom up. ठीक है हमने जो बिनिंग ऊपर डिस्कस किया था so binning did not use any additional informations
बिनिंग हमने एज की करनी थी, एज वॉज न्यूमेरिक, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने नहीं यूज की, तो दैट वाज अनसुपरवाइज्ड। कोई और हमको गाइडेंस नहीं दे रहा कि हमने इसको बिन किस तरह करना है, दैट्स अनसुपरवाइज्ड। ठीक है। एंड बिनिंग की ही बात करें तो बिनिंग इज टॉप डाउन, मीनिंग दैट कि आपके पास एक बड़ा बिन है, ऑल द एजेस फ्रॉम 20 to 60, उसको फिर आपने छोटे पे किया, 20 to 30, 30 to 40, and maybe you can do it recursively repeatedly, 20 to 30 को further divide भी कर सकते हैं, 20 to 25, 25 to 30 and so on. So these are called top down. So binning is unsupervised and top down. So there are techniques that are supervised and bottom up, and vice versa, supervised and top down and so on. So decision tree is supervised because you need a label. एक और एट्रीब्यूट चाहिए जो बताएगा कि हमारी बेस्ट इंटरवल्स क्या हैं। सो मे बी एज के आगे हम uh, कोई एट्रीब्यूट और लेट्स से यूज कर लें, लेट्स से उसका जॉब टाइटल टू डिस्क्रिटाइज द एज। सो फॉर एग्जांपल ए मैनेजर यूजुअली वुड हैव ए हायर एज, तो उसकी बिन डिफरेंट बनेगी और पहले वाले की बिन डिफरेंट बनेगी। तो हम दैट वुड बी यूज, दैट वुड बी कॉल्ड सुपरवाइज्ड, एंड इन दैट केस ऑल्सो इट इज स्टिल टॉप डाउन बिकॉज बड़े को छोटे में ला रहे हैं। तो नीचे से ऊपर से भी कर सकते हैं, तो बाय मर्जिंग कॉमन वैल्यूज टू फॉर्म बिगर इंटरवल्स। तो उसमें फॉर एग्जांपल एक टेक्निक आती है काई मर्ज, विच इज it is mentioned in the books but not very commonly used in practice. So chi, based on the chi-squared statistics, so this technique for example would be bottom up because based on merging and also supervised, because इसके लिए भी chi-squared निकालने के लिए आपको एक और एट्रीब्यूट चाहिए। ठीक है। तो so you need two attributes, a numeric attribute and a categorical attribute। ठीक है। बिनिंग, तो डिसीजन ट्री क्या है, ये भी सुपरवाइज है और ये टॉप डाउन है। ठीक है। बिनिंग क्या था, बिनिंग वाज अनसुपरवाइज्ड एंड आल्सो टॉप डाउन। ठीक है। सो दीज आर टेक्निक्स फॉर discretization. So let's move on to data reduction, which is I think a more relevant or important category or heading. So data reduction. So data reduction, as the name suggests, is we want to reduce the size of the data without hopefully significantly impacting the performance of the analysis. Okay, that's the goal. So इसमें usually हम दो, especially for tabular data, we further categorize it into a numerosity reduction. That's one. And the other is dimensionality reduction. Dimensionality reduction. ठीक है। सो न्यूमरोसिटी रिडक्शन में क्या है कि नंबर ऑफ रोज कम कर रहे हैं, आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप कम कर रहे हैं। डायमेंशनलिटी रिडक्शन में क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कम कर रहे हैं, फीचर्स कम कर रहे हैं, डायमेंशंस कम कर रहे हैं। ठीक है। इन बोथ केसेस ऑफ कोर्स डेटा साइज छोटा हो रहा है। ठीक है। सो बोथ ऑफ दीज आर रिडक्शंस एंड इन अ वे दे आल्सो ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी आप रिडक्शन कर रहे हैं तो डेटा भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है। बट वी आर डिस्कसिंग दिस अंडर इट्स ओन सेपरेट हेडिंग बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट प्रीप्रोसेसिंग स्टेप। ओके। सो सो न्यूमरोसिटी रिडक्शन पहले देख लेते हैं। uh, so we want to reduce the number of objects or observations or examples in our data. So इसमें जो मोस्ट कॉमन टेक्निक है वो एवरीवन नोज इज सैम्पलिंग। ठीक है।
So sampling, of course, is simple random sampling that's commonly used, or you can use random sampling with replacement or random sampling without replacement, with and without replacement. Okay? So these are the three common ways of doing sampling. The idea is very simple. Let's say आपके पास 100 observations हैं आपके data में, and you want to take a sample of just 10. So generate a random number between 1 and 100 and select it. ठीक है? So generate a random number between 1 and 100 and select that example. So if you're doing it without replacement, uh, so you simply generate a new number and you select it again. Okay, but sorry. So without replacement, meaning that you cannot select that number again. So let's say if you generate a new number and the same number comes again, you will skip that random number and generate a new one. Okay? But with replacement is that if you get the same number, you select that number twice, that observation twice. Okay? So So which one is generally preferred, with replacement or without replacement? Anyone? So with replacement में आपके पास duplicates आ सकते हैं, ठीक है? Some techniques may get confused if you have duplicate observations in your data, although there are a few, not many. So that might be a disadvantage. But the bigger advantage of sampling with replacement is that you tend to retain the uh, true distribution of the original data in the sample. So bias उसमें कम होता है. So the sample that you selected is a more is a better representation of the uh, complete data from which you have drawn the sample. But if you had taken without replacement, then there will be greater bias, and this bias would be larger if your data set is smaller and your sample size is a large fraction of that size. So this is very easy to understand. So let's say आपके पास 100 observations है, ठीक है? और आपने सैंपल लेना है, लेट्स से 80 का सैंपल लेना है, ठीक है? सो इफ यू डू विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, the probability of selecting the first example is obviously 1 over 100. But once you remove that example, because it's without replacement, ठीक है, the next one would be 1 over 99. And if you have taken this 80th आपने select कर लिया, उसके बाद सिर्फ 10 ही एग्जाम्पल्स रह गए, तो अब उसके बाद सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी 1/10 हो जाएगी. So the selection probability has varied with the number of samples that you have taken. So that is undesirable. In other words, the sample that you get would be biased and would not be a true representation of the original data. Of course, this bias would be negligible if your data set is huge. Let's say आपके पास hundreds of thousands observations हैं, उसमें से sample सिर्फ आपने 1000 लेना है, ठीक है? Sample size छोटा है और आपका original observation huge है, so this would be negligible. But if your sample is a significant fraction of the total number of observations, then this bias would be large. Of course, this bias would not exist if you do with replacement. So with replacement में 80 सैंपल भी जब आपने सेलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट सैंपल सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/100 ही होगी. इट विल नॉट बी 1/10 और 1/20, सॉरी 20 रह गए आपके पास, ठीक है? सो so simple random selection without replacement or with replacement.
So if you can do, then with replacement is better in most data mining scenarios. But if your data set is very large, sample is small, then it doesn't make much of a difference. Okay. Uh, so in terms of numerosity reduction, this is the most common technique and the most commonly used. Book में and other places में compression भी लिखा हुआ है, but this is hardly used in practice unless your data is images and videos, और उसमें obviously we consider uh, the compression as part of our model. उसी compressed data ही हम process कर रहे होते हैं, ठीक है? So it doesn't add any additional, let's say, step into our data mining task. But of course, there are other compression techniques that can compress data uh, of different formats. But as I said, they are less commonly used in practice, so we won't be discussing this. Okay, now let's move on to dimensionality reduction. Okay, so here, as we said, we are reducing number of features, number of attributes, okay, or dimensions. So okay, so the first one is feature subset selection or attribute subset selection. Mm. So meaning that whatever set of features that you have, उसी में से आपने एक एक सबसेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? सो लेट्स से आपके पास ओरिजिनल डेटाबेस में ए बी सी और डी था. So to reduce the data, you should select the best. Let's say you want to reduce it to just two features. So you should select the best two features for your analysis. So let's say the best two features may be B and D. तो आपने A और C ड्रॉप कर दिए, ठीक है? So this is now B and D is a subset. Now the question obviously is कि B और D हमने किस तरह select किए? तो यहाँ भी हमको कोई criteria define करना पड़ेगा. तो usually selection criteria आपको define करना पड़ेगा, and then again not going into too much sophistication, we will simply apply the criteria greedily. जो बेस्ट एट्रीब्यूट आपको आ रहा है वो पहले ले लेंगे, नेक्स्ट बेस्ट लेंगे, दूसरा ले लेंगे, नेक्स्ट बेस्ट तीसरा ले लेंगे, एंड सो ऑन. सो इन दिस सिनेरियो, इन दिस एग्जांपल, लेट्स से हमारी रैंकिंग जो थी अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया वाज बी डी ए एंड सी, ठीक है? सो इफ यू वांटेड टू सेलेक्ट just one attribute तो हम B लेंगे. If you wanted to select two attributes, we select B and D. If you wanted to select three, then B, D, and A. Okay. So, and of course, ये जो ranking हमने की है based on some selection criteria. So selection criteria would obviously be based on some supervised. It will be has to be done on based on some other attributes or set of attributes. तो जनरली ये कोई क्लासिफिकेशन टेक्निक के बेसिस पे हम कर रहे होते हैं. लाइक से डिसीजन ट्री लेके हम रैंक कर रहे हैं कौन सा बेस्ट एट्रीब्यूट है, कौन सा नेक्स्ट बेस्ट एट्रीब्यूट है, कौन सा नेक्स्ट बेस्ट एट्रीब्यूट है. Of course, to create a decision tree, you need a class label or some other attribute on which you are trying to decide. ठीक है? और फिर जब डिसीजन ट्री बन जाए, टॉप एट्रीब्यूट जो सेलेक्ट होगा, दैट इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट. उसके बाद नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, ठीक है? So this is feature subset selection. So from the available set of features, we want to select the best subset. ठीक है? इसके बाद जो the other technique is other category within this is sometimes simply called dimensionality reduction. जो हमारा heading थी,
वो भी उसी से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, काइंड ऑफ word overloading. So in this case, we basically find new dimensions and then select the best. ठीक है? So we don't select the best from the original set of dimensions. We create new dimensions or new features, or in other words, we project our original data space into a new space, feature space, you can call it, and then select the best features from that space. ठीक है, इसमें एक्चुअली काफ़ी टेक्निक्स आ जाती हैं, and most of these techniques are mathematical in nature. So I will mention a few here, but we won't go into the details. So the most common, which you probably have heard and used, is PCA, Principal Component Analysis. ठीक है, तो आपके पास ओरिजिनल को स्पेस थी, उस स्पेस को आपने उससे आपने एक नई स्पेस ढूंढ ली, सच दैट the new space, in the new space, the features have high variance, from high variance to low variance. ठीक है, सो अब जब नई स्पेस ढूंढ ली है तो उसका मतलब नया फीचर आ गया, अब उस नए फीचर में से आप टॉप फीचर सेलेक्ट कर लें. ठीक है, सो सो दिस इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. सो लेट्स से आपके पास ओरिजिनली आपके पास एज और सैलरी थी, आपने नए फीचर सेलेक्ट कर लिए. इट माइट बी कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड सैलरी, and in terms of space it might be some rotated features, so उसका axis में भी यूं हो सकता है. ठीक है, so now you use this axis which might be a new attribute, which is a combination of age and income, as the most important attribute, और second वाला आप फिर drop कर दें. ठीक है, so this is principal component analysis. और इस तरह की फिर और बेशुमार टेक्निक्स हैं with slight differences. So there is something called independent component analysis. You can use that as well. इसमें जो criteria variance नहीं होता, वो independence होता. Principal component analysis में जो criteria for projection is variance. ठीक है. You can also use non-negative matrix factorization, especially for values that are all numeric. ठीक है, इसमें we solve an optimization problem, कि हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था और जो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स था, दोनों में डिफरेंस कम होना चाहिए. Sum of squared errors, for example. Regenerated matrix का difference कम होना चाहिए. So non-negative factorization is another technique that is commonly used. So let's say, in other words, let's say original matrix A था, data matrix A था, you convert it to some two matrices B and C. अब B और C की dimensions आप different कर सकते हैं. B छोटा size का होगा और C छोटा size का होगा. ठीक है, so we will do this decomposition such that BC को should be as close as possible to A. तो एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लगाएंगे हम. ठीक है, सो सो NNMF is another way of doing, and then finally we can use autoencoders as well, which we will discuss when we start discussing neural networks. So autoencoders are techniques, neural networks that can find representations in latent spaces, lower spaces of smaller sizes from your original data. ठीक है, तो we will discuss this in slightly more detail when we discuss neural networks. So PCA, NNF, ICA, or NNMF, I won't discuss that, but you will find implementations of these in whatever platform that you use. Python में मिल जाएंगी आपको, और R let's say use करते हैं, MATLAB use करते हैं, सब में मिल जाएंगी. ठीक है, okay. So the question was, can quantization be used? So quantization is a data reduction technique. Yes, it can be used. So it is also quite oftenly used, especially sometimes in the neural network context as well. Okay. So quantization essentially
आपकी जो वैल्यूज होती हैं उसमें आप नंबर ऑफ बिट्स दैट आर यूज टू स्टोर दैट वैल्यू आर रिड्यूस्ड. सो इन अदर वर्ड आपकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट विच आपके कंप्यूटर्स में तो आप बिट्स एंड बाइट्स यूज कर रहे होते हैं. तो इफ यू आर representing a number with smaller number of bits and bytes, so your computation would be improved. So quantization can be used. So that's also possible. Yes. So data reduction की technique है ये. But this would typically come under numerosity reduction. It is not really dimensionality reduction or feature selection. ठीक है. इसको in a way आप इसको compression भी कह सकते हैं. ठीक है. A specific type of compression because you are reducing the size that you use to save data on disk. ठीक है, कोई और क्वेश्चन? अच्छा, मेरे ख्याल से टाइम भी खत्म हो रहा है हमारा. एनी क्वेश्चंस? ठीक है. आई होप आई हैव सीन ऑल नोटिफिकेशंस. लेट मी सी. ठीक है. So any questions? All right. Yes, the same idea applies there. You can quantize data. Yes, उसी तरह जिस आप weights quantize कर रहे हैं ना, data भी quantize हो जाएगा. Remember in the neural network, weights ही data है आपका. ठीक है. That's taking up space and that's taking up computational cost. द आइडिया इन डेटा रिडक्शन जो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं वो यही है कि वी वांट टू रिड्यूस द improve the computational efficiency. ठीक है, विदाउट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग द एंड रिजल्ट. तो न्यूरल नेटवर्क्स में वही एनोलॉजी लग रही है. वहाँ वेट्स आपका कॉस्ट, कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ा रही है, हम उसको क्वांटाइज कर रहे हैं. ठीक है. सो इफ वी हैड इन्फिनिट कंप्यूटेशनल पावर सो वी वुड नेवर डू क्वांटाइजेशन. हम उसको चला लेंगे विद वट एवर, even if we have billions and billions of weights. ठीक है. तो आइडिया वही है कि हम डेटा रिड्यूस कर रहे हैं. In neural network, of course, the task was to optimize, and in other cases, it might be something else. But we want to improve computational efficiency, so quantization से efficiency बढ़ जाती है, so that is desirable. ठीक है. So any other question?